हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं एआजन। तो आज इस वीडियो में मैं एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो सिंपली ये वीडियो मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर देने वाला हूं। तो ये पार्ट 1 है बनाना, जो कि मैं आज आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले से ही मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर रखा था, तो अभी मैं डॉम्स पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, हमें ऐसे ही ग्रीन कलर को पूरे बनाना में फिल कर देना है। तो गाइस, अभी मैं लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, एक और बात, जब भी हम एक 3D आर्ट बना रहे होते हैं तब ये पहले ज़्यादा 3D नहीं लगता है और रियलिस्टिक भी नहीं लगता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है शेड देने के बाद, तभी ये 3D तो गाइस, उसके बाद हमें शेड करने के लिए डॉम्स पेंसिल मैं 8B का यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने के बाद हम कॉटन बड्स का भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर, ताकि ये और रियलिस्टिक लगे। A few moments later.